चार्ज में कोलिजन क्या होता है, यही है स्टोरी ऑफ द थंडर एंड लाइटनिंग। चार्ज में कोलिजन मीन्स ये जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज होते हैं, मैटर्स, उनके अंदर जब कोलिजन होता है, और कोलिजन के साथ हम यही कहेंगे कि वहां से इनमें पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, चार्जेस, दे आर गेट चार्जेस by we can say that when water vapor goes up, and in that way concept the acidic substances also go there, they also contain some charged species along with them, and after the collision, when there is a collision of positive charge, it is called repulsion, and then here we called as negative is also called as repulsion. तो यहां से हम दोनों में कहेंगे कि जब इस किस्म का होता है कोलिजन, पॉजिटिव के चार्जेस में कोलिजन आएंगे, जब इस क्लाउड्स में होते हैं वाटर H2O, तो उसके अंदर जब इसमें ब्रेक डाउन होता है, वहां से बनता है H पॉजिटिव O नेगेटिव, so that gets the charge. When these charged, huge number of charges get collide each other, positives, negatives, and that creates that we called as sparks in a huge number. When huge number of positive charges and huge number of negative charges get stuck each other, collide each other, there we get the sparks. There we get lights, as well as when there is a collision between the two bodies, there is also, we can say that light is produced as well as sound is produced. So the lightning is the collision of positive charges or negative charges that gives the light, that means sparks, huge number of sparks, and that gets converted as a light and reaches on the earth, and little later the sound that we call as light and sound takes place simultaneously in the ionosphere, but why we hear a sound, thunder sound, little later than lightning? The reason behind it is both have different speeds. Sound and light has different speed. Light has more speed than sound, so we are observing lightning earlier, and little later we are hearing the thundering sound of thunders also. Otherwise, thunder and lightning is the collision of positive charges, huge number of positive charges, or huge number of negative charges, and that takes place simultaneously, but because of two different speeds, speed of light is more than speed of sound, so we see first a light on earth, and then little later we hear the thunder sounds because of less speed than light. ठीक है? तो this was the one natural phenomenon regarding natural phenomena. बहुत सारे यहाँ होते हैं, जब जो हमने पहले ही बताया, तो इसमें एक हमने थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया, हाउ दैट इज कॉल्ड एज स्टोरी ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, क्या होता है, वही हमने आज ये आपके सामने रखा है. तो सिर्फ इसमें ध्यान इतना रखना होता है कि ये जो लाइटनिंग और थंडर होता कैसे है, कि एक बॉडी के अंदर चार्ज कैसे बनता है. पहले न्यूट्रल होते हैं, बाद में चार्जेस आते हैं, और उन्हीं चार्जेस से जो हम कहेंगे कि पॉजिटिव जब सेम चार्जेस जब स्टक होते हैं, तो वहीं से स्पार्क्स बनते हैं. Either it is the positive or it is the negative. There is the huge sparks of light are produced, and that is called as lightning. And also there is a production of sound that is called as thunder. Okay, तो ये जो lightning thunder wholly and solely fully depends upon totally depends upon a number of particles, huge number of positive charges, or we can say that
it depends upon the intensity of the clouds. Okay, thanks, thank you a lot.